आज बनने जा रहा है teppanyaki fish. Yeah, fish teppanyaki. Fish teppanyaki. In Japanese, they call it Tai Teppan. Okay, so first of all, fresh garlic. Okay. This is the Pakistan favorites. They are using garlic, but very less. Okay. Japan, they don't like spice, na? They like, but very mild. Very mild, Very okay. mild only. They like raw food much, not the spicy one. Yeah, not too spicy. But now there's fish, Okay. It's a red snapper fish. ring snapper. आप चाहें तो आप कोई अपनी पसंद की जो फिश आप जो आपको पसंद है आपके टेस्ट के हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शेफ रेड स्नैपर यूज कर रहे हैं और जो लोग चूना पसंद करते हैं वो चूना भी यूज कर सकते हैं। Now you're putting Salt and pepper. salt and pepper. Yeah. Then after that, we need to squeeze the lemon. Lemon. आप देख के फिश लिया करें क्योंकि जब इसका मीट जो है वो हार्ड हो जाता है तो फिश इसका मतलब जो है वो सही नहीं है, फ्रेश नहीं है। So we need to put little More oil. Then we need to make it fall. What oil are you using? It's a olive oil or That one is canola or vegetable oil. Okay. यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड स्नैपर जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है। Okay, so now we will go for this garlic that which we sauteed before. Okay. Okay. Chef, do you like Pakistani food or do you cook Pakistani food? No. Sometimes. I've never cooked Pakistani foods, but I love Pakistani foods. Pakistani foods are spicy. Yeah, I love Spicy. I love spicy. I love spicy. That's very good. Mhm. And now we will put this Butter. butter. Okay. बटर ऐड हो चुका है। इसमें शेफ ने गार्लिक चॉप करके उसको फ्राई किया और फिश के अंदर उन्होंने सॉल्ट, पेपर और कुछ लेमन स्क्वीज किया। Put this vegetable. Vegetables. Yeah, this Some capsicum. capsicum, carrot, Carrot. and then dry onion, Okay. then cabbage. It's a julienne cutting, right? Yeah, julienne cut. आप जिस हिसाब से काटना चाहें अपने वेजिटेबल्स को काट सकते हैं। So again, we need to put the salt and pepper. तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने जो वेजिटेबल्स है इसकी जुलियन कटिंग की हुई है और इसी तरह से आपने अपने घर में भी कट करना है वेजिटेबल को। So now this is almost done. We will put little bit more of butter because it's already melted. आप जापानीज फूड्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि जापानीज जो लोग होते हैं वो काफी पतले से होते हैं, स्लिम से होते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं। Wishing sauce. We need to squeeze the lemon.